The topic of discussion is thermochemistry, and the subtopics are thermodynamics and exothermic and endothermic reactions. Let's see first what is thermodynamics. Thermodynamics is a compound word which means thermo means heat and dynamics mean heat in motion. So thermodynamics is the study of different forms of energy and their interrelations. Here you can see heat, and this heat is moving. So this is the simple meaning of thermodynamics. Thermodynamics means study of heat in motion. So basically thermodynamics is defined as branch of physics that deals with the interrelation of heat and temperature and their relation with energy and work. थर्मोडायनामिक्स में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं. फर्स्ट हीट एंड टेम्परेचर, वो किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं और किस तरह से हीट एनर्जी और वर्क में ट्रांसलेट हो रही है. Here is an overview of laws of thermodynamics. There are four basic laws of thermodynamics: zeroth law, first law, second law, and third law. So zeroth law stated that if two thermodynamic systems are in equilibrium with a third, then the two are in equilibrium with each other. अगर दो systems किसी तीसरे system के साथ equilibrium में हैं, तो वो दो systems एक दूसरे के साथ भी equilibrium में होंगे. First law is the change in internal energy of a system equals to the heat added to the system minus the work done. Or it's basically the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to another. ये definition basically हम physics में deal कर रहे होते हैं. Second law is about entropy, stated as the entropy of any natural and spontaneous process either increases or remains constant. किसी भी natural या spontaneous process जिसको हमें कोई external stimulus नहीं देना पड़ता, उसमें या तो entropy increase होगी या फिर constant रहेगी. And third law is entropy of a pure crystal is zero as the temperature approaches to absolute zero. जैसे ही टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल होता है, तो जो एंट्रोपी है किसी भी प्योर क्रिस्टल की वो जीरो हो जाती है. Let's define thermochemistry. It is defined as study of heat changes accompanying a chemical reaction. एक chemical reaction के दौरान जो भी हीट चेंजेस होते हैं, आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. हीट इज आदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो या तो उसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है. अगर वो इवॉल्व हो रही है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. और हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब क्यों हो रही होती है? क्योंकि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है. सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. So the overall energy change that occurs results from the difference between energy supplied for the breaking of reactant bonds and that evolved in making of product bonds. रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड करता है कि जो नेट डिफरेंस आता है एनर्जी से अप्लाइड फॉर ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स और वो एनर्जी जो इवॉल्व होती है जब प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनते हैं, दैट डिसाइड्स के आइदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. अगर तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स के निस्बत, तो एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, तो रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक. अगर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है प्रोडक्ट्स के निस्बत, प्रोडक्ट्स अगर हाई एनर्जी पे हैं तो मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. हमें एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है. The next concept is heat of reaction. It is defined as
the energy in the form of heat that either evolve or absorb in a chemical reaction. एक chemical reaction के दौरान वो heat जो या तो evolve होगी या absorb होगी उसे हम heat of reaction कहते हैं. Generally in all chemical changes, energy is exchanged with the surroundings, either given out or absorbed in a chemical reaction. That's why reaction would be either exothermic or endothermic. अगर heat evolve हो रही है, it would be endothermic. If energy is absorbed, then it would be endothermic reactions. So exothermic reactions में a reaction that releases energy from the system in the form of heat. जो system से heat के form में energy loss कर रहे हैं, evolve कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं exothermic reactions. जबकि endothermic reactions are those a reaction that the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat. वो reactions जो surrounding से heat absorb करते हैं उन्हें हम endothermic reactions कहते हैं. Let's discuss a question. A process which takes place on its own without any outside assistance is termed as isothermal process, adiabatic process, spontaneous process, or non-spontaneous process. The correct option is spontaneous process. This is the process which takes place on its own without any outside assistance. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.